नमस्कार, मैं हूं किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है साउथ सुपरस्टार निखिल, जिनकी फिल्म स्वयंभू जल्दी रिलीज होने वाली है। अब क्या है इस फिल्म की खासियत, आइए इन्हीं से जानते हैं। Congratulations for the film. Thank you, ma'am. And Amar Ujala, so nice of you to call me a superstar. You know, I don't like the star tag because I'm just Nikhil for everybody. But that's me, and I know I look very different. I think कार्तिकेय ने तो सुपरस्टार बना ही दिया है Thank आपको। you. It is so difficult, है ना, निखिल बुलाए कि कार्तिकेय बुलाए, ऐसा हुआ है कब लोगों ने? सब लोग, you know, yesterday Mumbai event में भी, like, you know, जब टीजर दिखा रहे थे स्वयंभू की, सब लोग कार्तिक सर यहाँ पे जो पैप्स आ रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग कार्तिकेय 2 देखे हैं ना, तो I'm like, I don't mind because that is the influence of the film, man. Agreed, So yes. they really loved it, and I'm very happy, you know, that they all encouraged me. और वो love की वजह से, like, you know, they want me to come back, and that's the reason why we are back with Swayambhu right now. अगर जर्नी की बात की जाए, स्वयंभू की जर्नी किस तरह से डिफाइन करेंगे? स्वयंभू की जर्नी 2 साल की थी मैम, 2 साल से ज़्यादा। और कार्तिकेय 2 के बाद सब लोग पूछ रहे थे कि, लाइक, यू नो, निखिल क्या कर रहे हो, घर पे बैठे हो क्या, ये फिल्म नहीं बना रहे हो? मैंने बोला कि, लाइक, यार, whenever I'm going to come, I'm going to do something, you know, which is going to surprise the audience. Which is going to make the audience be like, "Arey yaar, this guy has taken time for something." And this is a project which needs time, man. 180 days का shooting था, and we had like some of the top technicians working on this, and we have so much graphics and so much training for this that time लग ही गई. And अब जब teaser release होने के बाद लोग बोल रहे हैं, अच्छा निखिल, we understand what you have done for this, so I'm very happy. एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं अभी बॉम्बे में हूँ, आप सबको मिलके प्लीज प्रमोट द फिल्म बोलने के लिए। सुना है काफी रिगरस ट्रेनिंग की गई है इस किरदार के लिए, बताना चाहेंगे? हाँ, ट्रेनिंग तो 100% सब एक्टर्स को करना है, मगर इस पीरियोडिक फिल्म में मैं आई एम डूइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर, एक छोटा सा सिपाही, तो थोड़ा स्वॉर्ड ट्रेनिंग, घोड़ा चलाना, ये सब आई हैड टू डू इट, एंड आई हैड टू डू इट वेरी नेचुरली। और घोड़ा चलाना इज ओके, तीर चलाना इज ओके, बट घोड़ा चलाते हुए तीर चलाना इज लाइक अ डिफ़िकल्ट थिंग। सो उस टाइप की ट्रेनिंग भी मैंने ली थी, एंड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग लेने के बाद वियतनाम जाके हमने लिया था। माय प्रोड्यूसर वाज वेरी नाइस, ही सेंट अस, यू नो, टू अ नाइस प्लेस, एंड विद 30-40 martial artists who had only dedicatedly taking care of me. And so it was just you and you were surrounded with like 40 martial artists? Yeah, martial artists. Wow. And we used to wake up in the morning, we used to choreograph the entire sequence. They used to jump on me and fight and tell me how to do it, because इस मूवी में there are sequences, we have got hundreds of soldiers, hundreds of fighters, and thousands of juniors, you know, पीछे, तो we had to come up with you know, this kind of training level for that. So because, you know, अगर training नहीं किया और we waste time on the set, you're going to waste crores, because, you know, every minute is very precious on the shooting set. ये जब आपकी बात सुन रहे काफ़ी सरप्राइजिंग भी लगता है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहाँ पे लोग VFX और CG यूज़ करते हैं। एक एक्टर आता है, अपना टाइम देता है विद टाइम पीरियड, अपना काम करता है, एंड देन द एंटायर थिंग इज फोकस ऑन CG एंड VFX। ऐसे में इवन यू से कि 1000 जूनियर आर्टिस्ट थे, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट? क्योंकि कोऑर्डिनेशन, स्पेशली एक्शन सीन्स के लिए, इस मूवी में सेकेंड हाफ में एक 55 मिनट का एपिसोड है मैम, नॉन स्टॉप बैक टू बैक एक्शन, एंड द एक्शन गेट्स बिगर एंड बिगर। सो उस टाइम में, लाइक, यू नो, ये सारे फाइटर्स जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इफ वन गाय इज डूइंग अ एरो फ्रॉम हियर, वन गाय इज डूइंग अ, आई हैव टू मिस दिस एंड दैट, सो अगर एक भी कुछ गलती होगी वो लग जाएगी, इवन दो इट इज नॉट शार्प, इट्स स्टिल व्हाटएवर, यू नो, इट्स अ वेपन काइंड ऑफ, लाइक डल, नॉट शार्प बट स्टिल। So I wanted, for my safety, I had to rehearse. And I told my producers and my director that I'm not going to use a dupe at all, because I want to live the character, I want to feel it, and I'm still young and I'm healthy, so I want to do it. Yeah. 2 पार्ट में रिलीज हो रही है? नहीं मैम, एक ही पार्ट। ये फिल्म एक ही पार्ट में रिलीज होने वाली है। अच्छा। एंड मे बी अगर सक्सेस होने के बाद, इफ पीपल लाइक कार्तिकेय 2 और 3, अगर और एक पार्ट होना चाहिए तो मे बी वी कैन कंटिन्यू इट, बट दिस फिल्म इज फिनिश्ड 1. अगर लोगों को पसंद आया तो सोच सकते हैं। Definitely, maybe they want another adventure, we'll do it. You know, जब हम like it's been 18 years of me covering Bollywood industry, हम अक्सर अब कंपेयर करते हैं साउथ के साथ में भी। when we talk to people, we say कि साउथ में इतना अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी फिल्में आ रही हैं। Thank you. तो अब ये जब मुझे मौका मिला है आपसे बात करने के लिए, आप लोगों का नजरिया बॉलीवुड को लेकर किस तरह से होता है? See, it's always been a thing of, you know, respect and lot of wow factor. You know, बहुत बार, like, you know, maybe 15-20 years पहले we would be like, you know, अरे ये बॉलीवुड फिल्म की तरह बनाना है, ये बॉलीवुड टेक्नीशियन को लेके आना है, मगर slowly what happened was we started developing, you know, good technicians in
साउथ टू. फॉर एग्जाम्पल यू नो आई एम वर्किंग विद के सेंथिल गारू राइट नाउ, जो बाहुबली RRR जैसे मूवीज इन्होंने कैमरा वर्क किया था. तो आई फील नाउ वी आर एबल टू give our creative space, and not just Bollywood, all over the world people are looking at Indian cinema, and I'm very impressed. Like you know, recently we have some technically crazy films like Dhurandhar which have come, or Animal which was so good, and I can keep naming. Even Sayyara was such a lovely film. हमने देखा like you know South में भी. So we are competing, and you know competition के साथ best ही आ जाता है, and in the end we are all Indians. हम सब भारतीय है, तो it's good. So do you feel कि साउथ सिनेमा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है? हाँ मैम, वो तो ज़रूर, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड बट प्लीज डोंट सेपरेट अस, यू नो, दैट्स ओनली थिंग, बिकॉज आई थिंक South Indian films have a little more of you know a little bit of more rooted, and I think Bollywood is more adventurous, so you know they go for like full on, and आजकल South India में गाने भी like you know we have too much dancing, maybe Bollywood has a little less dancing, so small differences but not too much. Yeah. And coming back to Bollywood, I'm sure offers to aate hoge, or would you like to share any of your experience with getting offers or something which didn't work out but you wanted to? Ma'am, I've been getting offers from you know Hindi production houses and directors also. The only reason I have not been accepting it is because मुझे ये lineup है जो मैं कर रहा हूँ अभी. Swayambhu is there, then I'm doing a movie called India House and Kartikeya 3. So all these 3 films are being made simultaneously in Hindi and Telugu. Like एक shot हम हिंदी में करते हैं, एक shot हम तेलुगु में करते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज टेकिंग माई टाइम अप, एंड मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट द तेलुगु मार्केट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेड एंड बटर, सो आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ बिगर इन साउथ, एंड ऑल्सो वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी. हर एक फिल्म हिंदी में नहीं आएगी, मगर जब चांस है, जब मुझे लगता है कि ये फिल्म हिंदी में भी वर्क होगी, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, जैसे लाइक स्वायंभू की तरह. लास्ट फ्यू क्वेश्चन, हिंदी फिल्म में से कौन सी, आपने जिक्र तो किया है 3 फिल्मों का, बट आपकी कौन सी एक ऐसी फिल्म है जो अगर मौका मिले तो आप उसका रीमेक जरूर करना चाहेंगे? We wanted to, I mean, I love अंदाज़ अपना अपना. Oh my God, it's my favorite. मेरे फैमिली का मूवी है, हम सारे मम्मी डैडी सब लोग बैठ के like you know he does Prem, I do Amar, my mom does Ravina. So it's such a funny film, and I think if I do a multi-starrer ever, I should do अंदाज़ अपना अपना's remake. What a film! Aamir Khan and Salman Khan were like so good. इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में से कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है? In the industry, I mean, I'm just getting to know everybody, but I think did you get an opportunity to meet, or was there any fan moment? There was a fan moment. I was playing Celebrity Cricket League, CCL, recently, and then you know Salman Khan sir, I was just telling about Andaz Apna. Salman Khan sir invited us to his room. He said, all the Telugu team come to my room, we're going to like have breakfast. So match ke baad, whatever, the next day we went for breakfast to his, and he was so nice. He was like, Nikhil, like, Salman sir, you know my name? He was like, yeah, yesterday you played, no, the match? I was like, yes sir. I'm like, so it was a proper fan moment, and having breakfast with him was amazing. थोड़ा भी कोशिश किया कि तेलुगु सिखा ले उन्हें? नहीं, like you know, he's alpha man. He's like he's the man. So, but I was just open mouth watching him, and he was so hospitable and you know wonderful man. साउथ की अगर बात की जाए तो who do you consider your icon as? Yeah, there are like everybody is an icon. You know, it's like in their own way, they're leading the film industry from the front. I think I mean I've always been a fan of Pawan Kalyan sir, because there was a time when back to back 4 to 5 films of his just shook the youth, and that was my youth. You know, Kushi, Badri, and all these films, Toli Prema. So I mean, you should watch them if you can get a chance. So I became a fan, and once you're a fan, you start loving them even more. So yeah. Any plans to get into politics? This is just a sudden question. No, but my family is like you know my sister's husband is like part of a political. So I sometimes go to like support them. I don't belong to any party, but as a family member, I go and support my family. So if you would be a politician, if not and not the actor, what is that one change you would feel कि ये change में ज़रूर लाता इंडस्ट्री में? Industry में, movie industry में, oh that is. As a politician. As a politician, industry में, I think, ma'am, maybe I think the insurances and all that, you know, a lot of workers, you know, sometimes they get injured and they can't act in movies anymore, and you know they don't have a support. So I think some kind of a health insurance is something which I would do. But if I was the CM, that was a politician, I would definitely do something amazing. But I don't want to be. Too much stress, ma'am, because some लोग acting में people love you. I mean, everybody loves you. Politicians, it's like papa means like a very Telugu word. Pap jare, they get
scolded for everything. कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, करंट चले गई यार, ये पॉलिटिशियन का गलती है. Maybe it could be, कोई but वहाँ पे चला गया तो वो भी गलती गलती है. So it's like I don't want to be that. I'll do social service in my own way. Okay, and what about Karthik? Just mention about it. So would you like to just share something about it? Chandu Montieti is writing a story. He's doing other films right now, and I'm doing Swayambhu in India House. So we have finding a common route maybe end of this year. So December or Jan of this year, next year, we're going to start the film. Start shooting. Yeah. We're going to start shooting and we're going to bang it. So because that is responsibility again, because 1, 2 have been such a big hits that Exactly. third has to be like bigger. This was about to, I was about to ask this question. When we mention about when we talk about responsibility, how does it change your thought process in taking a creative decision? I keep myself away from creative decisions, ma'am. I give my director a free hand. But if I think something is going wrong, I 100% guide them. I'm like, bhai, we criticize other films, we talk about, you know, ये फिल्म में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. तो अगर तुम्हारी फिल्म में अगर तुम्हें दिख रहा है, तो I make sure that I do that. Self-criticize your own film first. But otherwise, I come, sit in my caravan, enjoy the food, go act, do my thing and come back. Yeah. साउथ में एक और चर्चा बहुत है, उसको वो सवाल किए बिना मैं हटने वाली नहीं. Please. विजय और रश्मि का शादी हो रही है. I didn't get an invitation yet. अगर इन्विटेशन मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, बट अभी तक I didn't get an invitation. कितना बज़ है इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर? I mean they look great on screen together, and I think you know, people, if they find love, they should be happy. I won't be saying anything more than that. But yeah, Vijay is a great guy, and I think Rashmika is a superstar. So I think both of them look good together. If that happens, invite me, guys. Yeah. जी, Karthik. Nikhil, thank you so much for answering my questions and all the best for future interviews. Thank you so much. Thank you so much, Jana. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें